Good evening, my dear children. Can you all hear me and see me? Good evening, everybody. This is Dr. Vani and this is Biotonic, India's most loved bio channel. Welcome, my dearest batch of 2021, that is the class 12, to the question bank series on the sexual reproduction in flowering plants, part 2. Where I'm going to be discussing not only the synopsis of the chapter, the flowcharts, MCQs, analysis of each MCQ, but so much more. So welcome to today's super cool, super awesome, absolutely phenomenal session, my Biotonians. How are you doing, everybody? How's your Josh and how are you doing? शुरू करें आज का बहुत amazing question bank series. Yes, everyone. Yes, ma'am के नारे बहुत तेज होते हुए हमारे सुपर ऑसम क्लास में परफेक्ट हो. चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं गाइस. लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स डू टुडेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द क्लास इन व्हिच today we started with NCERT rank booster. We went ahead into biological classification, sexual reproduction, flowering plants. It was just phenomenal. Yes, everybody. तो शुरू करते हैं इसी के साथ. आपको कल के बारे में भी बता देते हैं. Tomorrow is a very important day because tomorrow I'm going to be doing the NEET Botany mind maps. तो जितने भी बच्चों को 12th क्लास में जो है जिनकी 11th की बॉटनी वीक रह गई है वो sharp at 10 AM NEET Botany mind maps के लिए आ जाए. Morning I'm going to be doing mission MBBS previous year questions and in the evening exchange of gases and mechanism of transcription. Don't forget to make sure if you want to see your face here, you want to have the stethoscope around your neck, you see yourself in the way we have shown you. Don't you forget to like, don't you forget to share, and don't you forget to subscribe to our super duper amazing channel. Leave a comment behind, tell us how you're feeling about our new channel. How are you feeling, mascots? And overall also, if there's something that you want to discuss with us, guys, if there's anything which is troubling you, there's something you want to discuss with us, don't forget to tell us your problems, and I promise on behalf of Vedantu, we always have your back. We're always there for you. We're always trying to, put you out of harm's way, find and make things easy for you. So if there's anything that we can do for you, let us know on the Telegram group also. Because तहे दिल से हमारी तो यही कामना है कि आप सब ऐसे डॉक्टर्स बन जाइए जिन पे ना सिर्फ आपके माँ बाप को, आपके बहन भाई को, आपके टीचर्स को, पर इस देश को गर्व हो. इस देश को ये गर्व हो कहने में कि ऐसे होनहार, ऐसे इंटेलिजेंट, ऐसे अमेजिंग डॉक्टर्स इस देश के हैं. सो ऐसे बच्चों के लिए that is why all our efforts are becoming one, only to make sure that you become doctors like this. You become the saviors of mankind. You become the future of our country. You become the future of this great democracy that you and me call our motherland. Guys, immediately after the session, जैसे मेरा session खत्म होता है ना, नीचे description box आ जाता है जिन बच्चों को problems होती है PDF लेने में. description box पे content में आप अगर click करते हो तो ऐसा एक chapter by chapter, lecture by lecture PDF खुल जाता है. उस PDF में आपको सारा content एक साथ मिल जाएगा. Guys, एक छोटा सा टाइम मैं आपका लेना चाहूंगी. Yes, I know it is your time, very precious, but मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करके we will move ahead. एक मेंबरशिप होती है जिसको प्रो मेंबरशिप कहते हैं. प्रो मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलती है. एवरी सिंगल डे यू विल हैव अ लाइव इंटरैक्टिव क्लास विद द फैकल्टी ऑफ वेदांतु. डेली क्लासेस ऑन अ पेटेंटेड वेव टेक्नोलॉजी. इसको अमेरिका से पेटेंट मिल चुके हैं. वेयर इट इज सो अमेजिंग. एक बार आपको जरूर हमारे वेबिनार्स और लॉन्ग टर्म क्लासेस अटेंड करके देखना चाहिए. आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी विद एनालिसिस. डेली क्लासेस होंगे. हर एक क्लास का नोट फॉर्म में PDF रिकॉर्डिंग्स जिनको आप कितनी मर्जी बार यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स. असाइनमेंट्स विल बी गिवन टू यू. 40,000 plus hours of live teaching with over 10,000 MCQs. 20 plus teachers with over minimum of 5 years of experience. Each and every teacher in the bio team is specially trained by me. So we do all of the training here. Tests, assignments with over 10,000 questions. English and Hindi separate batches. The best pro membership, the most beautiful part about the pro membership is it comes with a 62% off because we know that nowadays lots of families are facing COVID problem. So it comes with a 62% off and falls in the bracket of just $26.50 per month. $26.50 per month for 3 subjects like PCB with test with unlimited access comes to just about something like not even
Not even 600-700 rupees per subject for 1 month, right? It is so cheap. So something like, 700-750 you will get for 12 months every subject. It is very good membership, guys. Don't you forget this. करना क्या है, vdnt.in/ytpro पे जाना है, VD NEET Pro कोड लगाना है, VD NEET Pro, and you can become a part of our long-term super amazing sessions. स्टार्ट करते हैं अब हम मेंटी को. एंड गाइस ये मत भूलिएगा, ये देखिए ऐसा पीडीएफ आपको मिलेगा. ये आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है. रेकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, राइट, नॉन रेकरेंट एपोमिक्सी, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, हैप्लॉइड एपोगेमी. बहुत अमेजिंग पीडीएफ मिलेगा. सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड इट राइट आफ्टर द क्लास. डोंट फॉरगेट टू शो योर लव एंड सपोर्ट गाइस. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फेवरेट चैनल को. चलिए आगे बढ़ते हैं. जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में लिख दीजिएगा. वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. एंड आ जाइए मेंटी पे जिसका कोड है 777931. 777931. थैंक यू कार्तिक. कोड हमारा है 777931. तो जुड़ जाइए गाइस. आपका चैनल है, हमारा चैनल नहीं है. इट इज योर चैनल. आपने बनाया है इस चैनल को, जो भी बनाया. 777931 menti.com पे जाइए. सो आपको क्या करना है, सो मेनी न्यू स्टूडेंट्स आर देयर एवरी डे. सो यू हैव टू गो टू योर गूगल एंड वहां पे आप डाल दीजिए menti.com. ये देखिए, यस गेमर्स, or menti.com. just go to Google and say menti.com. something like this will open, and there you put the code 777931 and say submit. And once you say 777931 submit, तो आपको ऐसे हो जाएगा. Done, done. I'm Thomas and I've been able to join the quiz. Yes, chaliye. Starting in 5. I want each one of you to join. And today is Shamreen Sheikh's birthday. Shamreen, we wish you all the very best on your birthday. Become a really good doctor. Those of you who were present for the last session which happened at 5 p.m. know the very good quality questions that we discussed. Don't miss any of them. Don't miss any of them. Join everyone. वर्ष गेमर्स, हाय मैम, कैन यू रिमेम्बर मी? हाँ जी बेटा, मैम की मेमोरी खराब नहीं है. आप कितनी बार मैम को याद दिलाएंगे? चलिए, स्टार्टिंग इन 5, स्टार्टिंग इन 4. थैंक यू माउंटेन क्वीन. स्टार्टिंग इन 2. ओके हिना. स्टार्टिंग इन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन नाउ. चलिए, endosperm in angiosperms is formed from secondary nucleus after fertilization but prior to embryo formation. Before fertilization but after embryo formation. Come on, this is a good one. This is an easy one. Exactly. It is after fertilization but prior because embryo को जरूरत है endosperm की. So जैसे ही fertilization होगा secondary nucleus के साथ one male gamete will join. The secondary nucleus is diploid. The male gamete will be haploid. So it's going to be 3. That's the triploid primary endosperm nucleus. It is after fertilization but prior to embryo formation.
I think it's beautifully done, guys. Beautifully done. And guys, mascots, change your DPs. Let's show the world the power of education. Let's show the world that we Biotonic will make the best doctors. Let's show the world that Indian students will become the best doctors in the world tomorrow. Yes? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं. Come on guys, amazing performance. Don't break this. Question number 1, 2021, you rocked it. Next question on your screen, please. Endosperm of angiosperms is different from that of gymnosperms because why will the endosperms of angiosperm be different from that of gymnosperms? We've done it many times in the NTA test discussion. Angiosperms have fats. Endosperm is formed before fertilization. Endosperm is not formed before fertilization. It is diploid. Very good question. Slightly tricky options. Slightly tricky. My God. Angiosperms don't have fats. It's proteinaceous in nature. Angiosperms have diploid. Gymnosperms have haploid. So diploid तो कोई भी नहीं है. Angiosperms triploid. Yes, everybody. Gymnosperms haploid. तो diploid तो कोई भी नहीं है. Endosperm is not formed before fertilization. Endosperm of angiosperm is different because endosperm is not formed before fertilization. Flip question. अभी किया हमने. Endosperm of angiosperm is formed after fertilization, whereas gymnosperm is formed before fertilization because there is no male component. It is only the female component. We've just done it. Amazingly well answered. That's the remote control. मेरा गला बैठ चुका है दोबारा से इतने questions करवाने पे. चलिए अच्छे से कीजिए. The most common type of development of endosperm is cellular, lobial, nuclear or perispermic. Most common type of development of endosperm is come on. And guys, make sure if you're liking the lecture, if you like what we Biotonic is doing for you, if you want to attend the botany lecture tomorrow, don't miss the class. The most common type of development of endosperm is cellular, lobial, nuclear, perispermic. On your screens now. It is nuclear. Most common form of development of endosperm is it's nuclear. It's nuclear. Right? Cellular तब होता है जब nucleus के बाहर cellular बन जाए. आधा nuclear, आधा cellular is called as lobial. इसको free nuclear भी कहते हैं. Nucleus के बाहर cytoplasm develop नहीं होता. Come on everybody. 1200 बच्चे देख रहे हैं. 750 likes है ये. नाइंसाफी है guys. 1 like on my screen, 1 share, subscribe, and we move on to the next question on your screens. Come on. Biotonians, show some love. One meiosis produces how many male gametes? Good one. Good one, guys. Yes, Smith. How are you? Long time, Smith. Thank you, Payal. No, Miss NEET aspirant. Please tag it again. यार जितने भी बच्चे मुझे टैग कर रहे हैं ना इंस्टाग्राम पे स्टोरीज में बायोटॉनिक मैस्कॉट्स के साथ प्लीज मुझे वो टेलीग्राम पे भी भेज दो so that I can put it on my Insta stories. One meiosis produce how many male gametes? 4, 1, 2, 8. एक meiosis पे कितने male gametes बनेंगे? Meiosis के बाद कितने produce होते हैं? 2 कैसे हो जाएंगे? Meiosis 1 will produce 2, meiosis 2 will produce 4. One complete meiosis will produce 4 male gametes. Female also it is 4 male gametes, but 3 degenerate, only 1 remains towards the chalazal end. Right, everybody? चलिए अगला सवाल. Guys, I think this is the 6th question. If number of chromosomes in root cell of male plant is 40, leaf cell of female plant will be 60. Wow, endosperm में कितना होगा? Very good question. Come on, try doing it in 30 seconds. Thank you, Pragati Soni. How many of you are new kids? Anshika. Newbie. Shikha is not newbie. Ayush Vats is not newbie. Let's solve it. So if number of chromosomes in a root cell of male plant, see first you have to understand that endosperm, you need to understand this so that you don't make any mistakes. It's a very good question, is 3n. You need to understand this.
Out of this 3n, you need to understand 1n is male and 2n is female. That means 1n. So here root cell is deployed. So male 2n is equal to 40. Therefore n will be equal to 20 in males. Whereas female leaf is again deployed. So 2n is equal to 60. N will be equal to 30 in females. N will be 20 in males. If you look at it, 2n of female and 1n of male, that's equal to 60 plus 20 is equal to simple. Understood? Did you all understand this? Yes, Himanshi. Right? Chaliye agle sawal pe. Let's move on to the next question. Well done, guys. Well done. Come on, show some josh in the class. After 2022 aspirants were literally on fire. Rafe. I can promise you this essay questions आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगे. इतना डेप्थ ऑफ बॉटनी किसी चैनल पे नहीं मिलेगा. इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे. सॉल्व देम. प्रकाश आप यहाँ आंसर दे दीजिए. राफे, वेरी नाइस क्वेश्चन. Come on, guys, and you have to show some love to be Biotonic. It's your channel. 1 like, 1 share, and 1 subscribe back. You have to show some love to your channel. And naye bachon, tomorrow we are starting with botany. Don't miss it. Very good. Very good. Rafe. So the funicle is the attachment. Agar ye aapka, right? The point of attachment is the micropyle. ये आपका funicle है अगर, तो ये rafe means it overrides it. Ridge. It's a ridge which is formed. Very well done. On your screens, next question. All of them are your previous year questions. You will be able to do very, very well. In the given diagram, name the parts A, B, C, D and E. Very nice question. Come on. A, B, C, D, E. What is A? Is it the germ pore? Very good. A is the enzyme made up of sporoporin, B was intine, C is the vegetative cell, D is the germ pore, E was the generative cell. Awesome. This is a pure ma'am ने बोला. Don't leave it. अभी तक हम halfway mark पे भी नहीं आए. Do well. Identify the wrong statements regarding post-fertilization development. The ovary wall develops into a pericarp. The outer integument of ovule develops into tegument. The fusion nucleus develops into endosperm. The ovule develops into seed. There are two integuments, outer and inner. You will be able to do this question. Very well done. Guys, I'm proud of my students. My class 11th, class 12th, मेरा droppers, dreamers batch तो है ही amazing. Yes, everybody. Identify the wrong statements regarding the outer one is called testa, then the tegument. The ovary develops into the pericarp, correct? Yes. The fusion endosperm, yes. The ovule develops into the seed, the ovary into the fruit. The testa tegument, which is edible in pomegranate. Awesome blossom, guys. Where is the remote control? Lovely. चलिए अगले सवाल पे. चलिए very good. LS of an embryo of a grass, that means it's a monocot. What is the answer? The answer is this.
मेंटी जी थोड़े से सेंटी होते हैं हमें नजर आते हुए, बिकॉज बहुत अच्छी आंसरिंग चल रही है। मेंटी हफ्ते में एक बार एक क्लास में सेंटी होता है, पिछली क्लास में मेंटी एक बार भी सेंटी नहीं हुआ था। यस, और मेंटी का डिनर टाइम हो गया। मेंटी जो है ना वो सुबह 6 o'clock मेंटी की फर्स्ट क्लास होती है, तो 6 AM to 7 AM, 8 AM to 9 AM, 10 AM to 11 AM, 12 to 2, फिर 3 to 4 मेंटी जी को थोड़ा ब्रेक मिलता है, 4 to 5, 5 to 6। बड़ा परेशान है बेचारे मेंटी, व्हाट टू डू। यस, तो एक स्क्यूटेलम में जो कॉटिलेडन होता है, कोलियोप्टाइल, राइट, जो टिप की कवरिंग है, रेडिकल जो रूट की कवरिंग है, रूट कैप एंड द कोलियोराइजर ऑफ द रूट। कुछ नहीं होता, इस संडे मेंटी जी को थोड़ा रेस्ट करवा देंगे। डन। चलिए, कल मैस्कॉट लॉन्च हो गया, लोगो लॉन्च हो गया, रैंक बूस्टर लॉन्च हो गया, मेंटी जी को रेस्ट ही नहीं मिला, तो थोड़े से परेशान है। डोंट वरी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द लास्ट डिप्लॉयड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स? माइक्रोस्पोम, मदर सेल, जाइगोट, म्यूसिलस, पोलन ग्रेन्स। लास्ट डिप्लॉयड स्टेज। चलिए, which one of the following shows the last diploid stage in the life cycle of angiosperms? Zygote is the new life cycle, right? Nucellus, pollen grains is end. Last stage is the microspore mother cell, which is going to undergo meiosis. This is not the last stage. Isn't this the beginning? Or is it the last stage? Do you want to become murderers? Do you want to murder the zygote? Do you want to murder the zygote? बच्चे चल तू जा काम से। Zygote is the beginning. It's the first stage. They're asking you about the last diploid stage. Will nucellus undergo meiosis? Will nucellus undergo meiosis? पोलन ग्रेन तो पहले से ही है। तो लास्ट डिप्लॉयड स्टेज का मतलब वो जो ये तो फर्स्ट है, ये तो डेवलप करेगा बेटा। जाइगोट तो माइटोसिस करेगा, डेवलप करेगा। लास्ट डिप्लॉयड स्टेज हैज टू बी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा, ये सच बताओ, आउट ऑफ दीज अमेजिंग क्वेश्चंस वी गो थ्रू एटलीस्ट 5 books of 50 papers to be able to make such kind of questions for you. Trust me when I'm saying this. Just come tomorrow morning for the botany mind maps and you will be more than surprised. Yes, कितने thought provoking, कितने depth में बने हुए questions हैं। We are inching close to the halfway mark। बताइए, चलिए, easy question। बताइए, 1 क्या है? बताइए बताइए, कम ऑन। Yes, the outer one is the edible portion. It was fruit, apple. The thalamus, the seeds, the endocarp, the mesocarp. It's a false fruit. It was a pure apple को अगर ऐसे कट करोगे वही तो था exactly. It's not a true fruit. It's not a parthenocarpic fruit. What you eat is the thalamus, the receptacle. The thalamus becomes edible. तो true fruits तो वैसे ही नहीं है। Yes or no? Yes or no? Very good. चलिए अगले सवाल पे। Oh God, Asmi, I will do something. I will do something. I promise to you. चलिए बताइए आंसर इसका। कितने डायग्रामेटिक फोटोज वी गॉट टुडे सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है और 5 क्या है? Are you able to read it? Are you all able to read it? Not clearly visible. मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, right? Oh God, right? I will draw it for you. अगर आप नहीं भी पढ़ पाए, no worries. So ये पूरा एम्ब्रियो सैक की फोटोग्राफ थी
आई नो थोड़ा सा पढ़ने में मुश्किल हो रहा था। ये 3 आपके एंटीपोडल्स होंगे जो डीजेनरेट कर रहे थे, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, यहाँ एग अपैरेटस बन चुका था, ये दोनों साइनर्जिड्स हैं, ये एग है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है और वो एंटीपोडल्स है। राइट एवरीवन, जो बी ऑप्शन में दिया हुआ था, एटलीस्ट यू नो दिस। क्लियर नहीं था व्यू? नो वरीज। Oh, I loved it, Hina. Thank you so much. I will today itself put it on the community page for everybody. चलिए अगले सवाल पे। We have nearly hit the halfway mark, guys. Come on, show me your performance. We've nearly hit the perisperm. याद करिए, मैंने आपको इस चैप्टर में चार्ट्स करवाए थे. I've done the charts on this chapter. Is it the remaining part of the endosperm? Is it degenerating synoid? Is it degenerating secondary nucleus, or is it persistent remnants of nucleus? Come on, Biotonians. My bestest of all students on earth. Come on, Biotonians. Perisperm is the persistent or the remnant nucleus. If it remains even after fertilization, it remains, it's called the perisperm. Very, very, very good. Like I always tell you, Biotonians, if you want to do well, remember bio is equivalent to 2 subjects. So you have 4 subjects in NEET. You have physics, you have chemistry, you have botany, you have zoology. You cannot, आप कितना भी zoology पढ़ लीजिए, you become really good with zoology, but you can only score up to a limit, and that limit is 180 marks and 45 questions. You have to do botany, and today you're doing well. Perisperm is a very common botany question. It is persistent remnants of a nucleus. You have to do well. Tomorrow we are launching the mind maps of photosynthesis. You're in class 12. You've done plant physiology. Come in the morning at 10 o'clock. Yes? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं. Very well done. We've crossed the halfway mark. Thank you, Priyam Bhandari ji. चलिए, the term self, very nice question. Self-sterility. What is it related to? When flowers are neutered, that means they have only male or female parts. When ovules are not fertile, good question. Tricky options. When pollen grains do not germinate on the stigma of the same flower. When pollen grains are sterile. It is a method to cause cross-pollination. Come on, this is a very common question. On your screens, guys, and do subscribe to the channel so that you don't miss botany, which is very important. Very good, time is up. Yes, well done. Self sterility, उसी प्लांट की पोलन ग्रेन अगर उसके स्टिग्मा पे जाए तो वो फर्टिलाइज नहीं करेगी, दूसरे का पोलन ग्रेन फर्टिलाइज कर जाएगा. That is self sterility. मैंने आपको self incompatibility, self sterility, डाइपोगैमी, डाइक्लिनी, हेटेरोस्टाइली, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी सब कराया है. Very, very important. There was a special lecture on this. How many of you remember it? Make stars. जिनको नहीं याद है आज जाके देख लीजिए. डाइपोगैमी, डाइक्लिनी, self sterility, self प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी, मैंने पूरा मेथड्स, क्लिस्टोगैमस पूरा कुछ करवाया हुआ है. चलिए अगले सवाल पे गाइस. Female plant is diploid and male plant is tetraploid. Find out the correct match. Embryo is 6N, endosperm is 4N, integument is 3N. Female plant is diploid, male plant is tetraploid. Tetra. 2N is equal to 4N. Diploid is equal to 4N. Right, Rakesh? अलीजा जी धन्यवाद आपके ऑफर का, पर क्या करें, हम बड़े होनहार किस्म के हैं तो आपका ऑफर मुझे पसंद नहीं आ रहा अलीजा. यस, इसलिए शायद मैं आपको ब्लॉक भी नहीं करने का मन नहीं कर रहा मेरा आपको ब्लॉक करने का, क्योंकि आपका ऑफर क्या करें मुझे पसंद नहीं आ रहा. एक इंडिया की सिटीजनशिप और दूसरा वेदांतु की नौकरी, ये शायद हम कभी ना छोड़ें. यस, तो अलीजा जी जो कुछ कह रही थी पर मैंने शायद उनको ब्लॉक करने का मन भी नहीं किया, बट हाँ 2 चीजें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, एक इंडिया की सिटीजनशिप, दूसरा वेदांतु. यस, तो आपको पता चल गया होगा कि वेदांतु से कितनी शिद्दत और कितनी मोहब्बत है. यस एवरीबॉडी, चलिए आ जाइए. तो ये मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. Oh, let's go back in fact because I have to do this question to you. अच्छा ये क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद मैं करवा देती हूँ.
क्या करें, कई लोगों को थोड़ा बहुत रोस्ट करना भी जरूरी होता है। Following components are haploid, diploid, triploid, oosphere, microspore, cyanogens, antipodal, oospore, nucellus, placenta, chalaza, endosperm. Which of the following show the correct sequence of the ascending order of ploidy? Ascending order of ploidy. Very good. Very good. आपने बहुत पहले एक एड देखी थी बच्चों, some things are priceless, for everything else there is a mastercard। याद है किसी बच्चे ने वो एड देखी है? Some things are priceless, for everything else there is a mastercard। सचिन तेंदुलकर की एड थी, बहुत फेमस होती थी। Yes, right। So कई चीजें ना जिनके साथ आपके जज्बात जुड़े होते हैं, जैसे वी बायोटॉनिक। वी बायोटॉनिक से बहुत जज्बात जुड़े हैं। मुझे नहीं लगता मैं कभी भी वी बायोटॉनिक को छोड़कर कहीं जा सकती हूँ, नॉट पॉसिबल। बहुत लोग होते हैं आज इधर कल उधर, परसों कहीं और से ही, कल उधर से इधर, आज इधर से उधर होता है, राइट। इधर से उधर, इधर से इधर, उधर से इधर। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत। यस, कहते हैं ना कोस कोस पे बदले बानी, चार कोस पे पानी, ऐसा कुछ है, कहावत है। यस, पर नहीं, यहाँ मतलब जहां पर कई चीजें दिल से जुड़ी होती है, जैसे वेदांतु, जैसे बायोटॉनिक, जैसे भारत माता। यस, फॉर एवरीथिंग एल्स दाम लगाया जा सकता है, कुछ चीजों पर कभी भी दाम नहीं लगाया जा सकता। उनमें से ही एक चीज ये है। चलिए, आई थिंक समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, तो बी ऑप्शन पे आ जाइए, ए ई आई। राइट, ए क्या होता है आप लोगों का? ऊस्फेयर, असेंडिंग ऑर्डर पूछा है। यस। ई क्या है आप लोगों के लिए? ऊस्फोर। यस एवरीबडी। और आई क्या है आप लोगों के लिए? एंडोस्पर्म, असेंडिंग ऑर्डर में बताया गया। यस एवरीबडी। चलिए, तो इसके साथ मैं आपको ये पुराना क्वेश्चन करवा देती हूँ यहाँ पर, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए वो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उस क्वेश्चन में बताया गया था कि स्पर्म को टेट्राप्लॉइड कर दिया था। दैट मींस डिप्लॉइड स्टेज क्या कर दी थी? 4n। तो हैप्लॉइड स्टेज क्या होगी पिछले क्वेश्चन में? 2n। तो अगर मुझे एंडोस्पर्म बनाना है, फीमेल विल बी 2n plus 2n, मेल इज यूजुअली n, पर ये हैप्लॉइड इज आल्सो 2n, सो इट विल बी 2n is equal to 4 is equal to 6n। डिड यू अंडरस्टैंड? क्योंकि मेल हमें टेट्राप्लॉइड बोला गया है। यस और नो? यस और नो बता दो बस। थैंक यू जया। है ना अनबॉक्सिंग टाइम? करेक्ट, क्योंकि मेल हमें कितना बताया गया था? टेट्राप्लॉइड। तो जब वो टेट्राप्लॉइड है तो उसका n कितना होगा? 2n। अगर मैं 2n लेती हूं तो n को n करते हैं, अगर टेट्राप्लॉइड ले रहे तो इट विल बी 2n। चलिए, सही। यस एवरीबडी, लवली। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन प्लीज। थैंक यू जानवी। थैंक यू यासीर, थैंक यू यासीर। चलिए, बिल्कुल अपूर्व। Which of the following have double endosperm? Okay, I'm not going to give you a hint. It's very common. Very good question. Raffinus, coconut, Z-maize, betel nut on your screens. One like, one share, one subscribe. Yes everybody, coconut liquid and solid. Coconut liquid as well as solid. Yes everybody, lovely मेरे बच्चों, awesome. Liquid, Z-maize is only one, raffinus no, betel no, liquid endosperm the one coconut नारियल पानी, and solid endosperm जिसकी चटनी बनती है। चलिए, Z-maize is tetraploid, yes. Gamers, you can send it to me on Telegram or you can ask a doubt app. Conifers, thank you Vivek, Ramya, Sangeeta. Thank you Sangeeta Jha. All my new students, really become a part of We Biotonic guys. This is one of the most beautiful communities of students. Conifers differ from grasses. Absence of pollen tubes. Grass is a monocot. It's an angiosperm. Formation of endosperm before fertilization. Production of seeds from ovules. Lack of xylem. Tracheids. Conifer में ऐसा क्या नहीं है? Confuse मत होइए. Conifers
are pinus. बायो में बॉटनी थोड़ा सा मुश्किल होता है. जिनके पास ट्रेकिड्स होते हैं, they have tracheids, right? Production of seeds from ovules, yes, but only thing is seeds are naked. Seeds तो होंगे. Absence of pollen tubes. It is formation of endosperm before fertilization. एंजियोस्पर्म में बनता है, ना कि जिम्नोस्पर्म में. रिमेंबर कीजिए, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म इज ओनली एन विच द मदर गिव्स. इसमें कहीं भी फर्टिलाइजेशन की बात नहीं आती है, राइट? ठीक है, चलिए अगले सवाल पे. ये अभी तो हमने एक ट्रिक की थी, ये वाली. राइट नाउ वी हैव डन इट ऑन योर स्क्रीन्स. कम ऑन गाइस. And one like on my screen for those of you who still not liked our lecture. Tender coconut, जो हरा coconut होता है, उसका नारियल पानी कैसा होता है? Immature embryo, free nuclear endosperm, innermost layers of the seed coat, or the degenerated nucellus. Come on, Deepika, good Sonia, Preet, Hippocrates, Suraj Singh, Kamar, बताइए. कितने बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक कर लिया है और उनका पार्ट बन चुके हैं? How many of you become a part of Biotonic? Very good. Coconut water from tender coconut is free nuclear endosperm. It's free nuclear endosperm. Very well done. चलिए, you have to tell me which one of the following is not correct, okay? Not correct. मिसक्लिक क्यों कर रहे हैं बच्चों? Why still misclicks? Decrease your misclicks. Yes, Aman gang is there, Chulu gang is there. Some dancers are also there in the class with the red swirling dress. Well done guys. Guys, आपको लग रहा है, देखो हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. आपको ये रियलाइज हो रहा है कि इतने से चैप्टर में कई बार कैसे ट्विस्ट करके कितनी डेप्थ में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. Have you all been able to realize that? I really want you to realize that कि चैप्टर देखने में कितना आसान लगता है पर कैसे डेप्थ में ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं. थैंक यू बच्चों. चलो which one of the following is not true? चलिए, not true. Good. Tapetum helps in the dehiscence. No. Endothecium helps in the dehiscence. Tapetum helps in the passage of food, isn't it? So epidermis is the outermost covering. Endothecium helps in dehiscence. Parenchymatous cells help. Middle layer parenchymatous helps in the formation of food. Tapetum helps in the passage of food, and sporogenous helps in the formation of spores. अगला सवाल. चलिए, D for doctors. अगला सवाल. In majority of angiosperms, egg has filiform apparatus, numerous antipodal cells, reduction division occurs in the megasperm mother cell, small central cell is present in the embryo.
चलिए जल्दी। Very good. Majority egg has filiform apparatus. No, some of them may not have. Numerous antipodal cells नहीं, 3 होते हैं. Reduction division. Megaspore mother cell will always have reduction division to form the eggs. Right? Ovule banana है, it will have reduction division. Very well done. सुनीता रानी जी, good. चलो अगले सवाल पे guys. Pollination in water hyacinths and water lilies brought about by the agency of water, insect or wing, birds and bats. Lily, they have flowers, let me tell you this. वेरी गुड. वाटर एपिवेलिसनेरिया में होता है. वाटर लिली का इतना बड़ा फूल होता है और उसकी वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन होता है. बर्ड्स और बैट्स में. बर्ड्स एंड बैट्स आर यूजुअली फ्रूगिवोरस, राइट? एनसीईआरटी की लाइन है. कम ऑन गाइस, लास्ट 1-2 क्वेश्चंस बचे हैं. The ovule of an angiosperm is technically equivalent to, good question, ovule, megasporangium, megasporophyll, megaspore mother cell or the megaspore. Come on. And before you go, make sure you become a part of Biotonic. Make sure you like, make sure you share and subscribe. Make sure you spread the word around, guys. Dedicate this channel to some of your friends. Let your friends know about us and tell me what is the ovule of angiosperm technically equivalent to. Megasporangium, megasporophyll, megaspore mother cell or the megaspore. Yes, everybody. Shirbanu, how are you, Shirbanu? It is megasporangium. Megasporangium. I can never forget my almond gang. Remember this. It is equivalent to megasporangium. Sporophyll leaf थोड़ी ना है ovule. Sporophyll कैसे होगा? It is megasporangium. And with that, Indrani, mascot on top. Sri Vidya, my God, these 2 girls are back on the leaderboard. 2 years back. Harini Granger, long time no see. JB रोजा, बड़े दिन से आप दिखाई नहीं दिए. बाकी बच्चों के भी नाम लेने दो, सबके नाम लेने आज. Right? Aishu, Ritika, Shamya, long time. Chaitana, you doing well. Astha, JB, Rosa, Granger to you, Sri Vidya and Indrani. Lovely, lovely, lovely. Very good, guys. Tomorrow morning I will come with a previous year paper. Very important because शायद मैं कल आ रही हूँ जिपमर और BHU के combined paper के साथ मिस मत कीजिएगा. And tomorrow sharp at 10 o'clock we are going to be doing the super amazing botany mega mind maps. Yes, congratulations on, congratulations off the leaderboard. Don't forget to become a part of Biotonic. जाते जाते कर दीजिए subscribe इस amazing channel को. Don't you miss the opportunity to study botany and zoology from Biotonic. Bye kids, that's all for today. Take care. Ta-da. Bye. Bye.